Healing begins from within when you are close to nature. Acharya Shri Vijayavallabh School, Pune brings to you a webinar on naturopathy, one of the principles of Mahatma Gandhiji, to know the form of healthcare that combines modern treatment with traditional methods to allow the body to activate self-healing mechanism by our speaker Dr. Asawari Chitale. To create awareness of natural remedies to your health problems, our chairman Shri Subhashji Parmar has inspired and guided us to blend traditional medicine with conventional health care to work with the body on a natural level. To offer you the healing power of nature for your holistic health, let's begin with our today's interesting webinar. A very happy morning to everyone. With warm greetings, I, Farida Syed. A very happy morning to everyone. With warm greetings, I, Farida Syed, on behalf of Acharya Shri Vijayavallabh School, feel highly privileged to welcome you all to the series of Facebook Live Vijayavallabh Sunday Hour. With the inspiration and guidance from our chairman, Shri Subhashji Parmar sir, and members of the Education Committee, we have organized today a very fascinating Facebook Live webinar with our eminent speaker, Dr. Asawari Chitale ma'am, on the topic naturopathy, one of the principles of Mahatma Gandhiji. Our vision is to empower the youth and bring all the stakeholders together on one platform to discuss and learn about various aspects of naturopathy. Do you know that nature cure makes you healthy? So today, let's explore into this session and know more on the topic naturopathy, one of the principles of Mahatma Gandhiji. I'm sure it will really help and give you the jump start to your day. Now, I request our respected principal, Mrs. Snehal Khataukar ma'am, to present her views. Over to you, ma'am. Good morning to one and all. It's a great pleasure to welcome you all to Vijayavallabh Sunday Hour. From the bottom of my heart, I thank our today's renowned speaker, Dr. Asawari Chitale, for accepting our request and ready to preside our today's webinar on an interesting topic, naturopathy, one of the Mahatma Gandhi's principles. It is rightly said by Mahatma Gandhiji, be the change that you wish to see in the world. The future depends on what we do in the present. If we want to reach the real peace in the world, we should start educating children. Mahatma Gandhiji was one of the greatest freedom fighters that the world has ever seen. His policy of non-violence made him hit among the Indian masses. His simple living and high thinking fondly made him called as Bapuji. His birthday on 2nd October is observed worldwide as International Day of Non-Violence. Gandhiji strongly believed that nature cure system alone provide scope for self-help reliance. Naturopathy treats all aspects like physical, mental, social, spiritual at the same time. Naturopathy treats the body as a whole. We at Acharya Shri Vijayavallabh School imbibe the qualities in the students like truthfulness, faith, simplicity, forgiveness, honesty, self-discipline, non-violence to live simple and think great in our students so that they can become beautiful human beings. Our students also celebrate Mahatma Gandhi Jayanti in our school every year. With these thoughts, I wholeheartedly thank our chairman sir for the strong support and the guidance given to us to arrange such an interesting and motivating webinar. So let's move further and get enlightened on today's interesting topic, naturopathy, one of Mahatma Gandhiji's principle, and make this warning a wonderful one. Thank you. Over to you, Farida.
Thank you, madam. Now, it's an honor and privilege for me to introduce our today's guest of honor. On behalf of our school, I'm extremely glad to welcome our guest, Dr. Asavari Chitale ma'am, for today's Vijay Vallabh Sunday Hour. Ma'am is founder of Life Naturals, Nature Care for City Life. Our today's speaker, Dr. Asavari Chitale, after qualifying as an IT professional, MCA, that is Masters in Computer Application, started her career working in software field in the year 1998. She herself had recovered from a severe health problem from naturopathy treatment after trying out all the medicines from allopathic, homeopathic, and Ayurveda during her college days. Due to this experience, she developed a keen interest in knowing more about this nature's health science. This inspired her to give up the software field and take up further studies in this branch of health science. Since then, from the year 2003 onwards, she started practicing as naturopath and also established an online treatment system under the name of Life Naturals. For last 13 years, she has been guiding patients with so-called incurable diseases like IBS, diabetes, and migraine, along with all the basic health problems of acidity, constipation, headaches, prolonged fever. And in all these cases, all the patients have been successfully treated in the management and control of the diseases. In these 13 years, she has experienced that it's not the health problem that is serious, it's the lifestyle and approach towards the disease which is wrong that makes the problem go worst. All Life Naturals, they believe that the idea of being healthy should not only be related to the curing of disease, but it should be implanted in the society as health cure and passed on from one generation to another. For this, everyone has to be self-dependent or independent in maintaining their own health. To achieve this, they strive to educate people in the science of health and also spread the message of self-dependency in various sectors of the society. Ma'am, we are indeed very fortunate to have you with us this beautiful morning. Now, I request ma'am to share her valuable views. Over to you, Dr. Asavari Chitale ma'am. Thank you so much for a beautiful introduction. And specifically for today's day, it's a great honor. I would like to thank you, Chairman Sir, Principal Sir, the staff of the school, that I can speak and share some of my knowledge about my guru in nature cure, especially on today's day. So I would like to share my screen. Yes. Okay, so let me come to the topic of naturopathy being today's session. So when it comes to Mahatma Gandhi, we usually know him as a freedom fighter. He is commonly known as a freedom fighter, and very few people know him as a naturopath, or most of the people do not know the side of his personality as a doctor in alternative medicines. Usually he is recognized as a freedom fighter. So in today's session, let us try to understand that what is this side of Mahatma Gandhi where he is recognized as a doctor in alternative medicines, where he used to practice nature cure. So Gandhiji is known as a freedom fighter, and we have an idea of independence. What is independence for us? So independence for us is a state of being free from other person. We know independence as a struggle from the British rule specifically. And but Mahatma Gandhi's idea of independence was much more than just the freedom struggle. When he used to talk about independence, he used to mention that I want independence from the British rule, but I want my people to be independent on health level also.
there was a very good reason for this, why he mentioned independence on health level, because he said that the English form of medicines, what the British introduced in our country, is very expensive, and my country is of poor people. So first was the financial factor of this treatment that he wanted to introduce, because he knew that my people are poor, they won't afford this modern medicine, the English medicine system that is introduced in my country. So considering the cost factor, he wanted to introduce nature cure as the main medicinal system. And secondly, he used to mention that the implementation of this system of nature cure is more easy for a person and it is more enjoyable too. So considering all the three aspects, Gandhiji's idea of independence was a holistic one from the foreign rule and also on the health level for him. Now, we are very familiar with the Gandhian principle. It's very famous. The Gandhian principle is very famous. This principle stands on 4 pillars. First is truth, non-violence, sarvodaya, and satyagraha. Now, in simple words, if we try to analyze it, truth is acceptance of reality. Whatever is true, I accept it. Let's gather our facts first, and then we can distort it as much as you please. That is what we say. But gathering the facts, accepting the facts is the first thing. Second was the non-violence. Do not do anything that is going to harm someone, harm yourself or harm the other person. Avoiding that harmful behavior is non-violence. Third was sarvodaya. It is an overall thought of the society. It's not a personal uplift. मैं मेरे खुद के बारे में self-centeredly नहीं सोच रही हूँ. Gandhiji was a person who thought about the society as a whole. He didn't think about only himself. How am I going to progress? No. The idea was a progress of the society as the whole. And then we come to Satyagraha. Satyagraha was a passive resistance. If अगर हमें political और social environment में changes लाने भी है, तो भी friendly resistance. He always talked about non-violence in everything that he did. So Satyagraha was also a passive resistance. So Gandhian principle is based on this 4 pillars. Now, why do we, as after so many years, try to follow the Gandhian principle? Even in politics, always Gandhiji is mentioned everywhere. We know Gandhiji is standing on international level also. So in all the foreign countries, one Indian political leader who is recognized everywhere is Gandhiji. Even in foreign countries, he is well known and the Gandhian principles are implemented, followed and thought of. Now, why is that? Because this is a very famous saying in Marathi, right? Bole taisa chale, tachi vandavi paule. The person who thinks, what you think, what you say and what you do, if they are in harmony with each other, you have to follow a person who implements these things. So it is not only preaching. Gandhiji preached truth and non-violence, he followed it. He didn't only preach. Gandhiji preached naturopathy and he followed it himself. He was not only a preacher, he was a follower. And that made us, after so many years, or even in the foreign countries, the Gandhian principles are looked upon, thought upon and followed, and people try to talk about it and implement it, because he himself projected him as an example of what he preached. So he used to say it is the health that is real, not the pieces of gold and silver, that is what he taught. And he lived that simple life and showed people that what is happiness in true sense. But now the next question that we can give it a thought is, why Gandhiji advocated nature cure? Why not the other system? Why only nature cure? हमारे पास 4 streams of medicines हैं, right? It is allopathy, it is Ayurveda, it is homeopathy, and it is naturopathy. हमारे पास 4 systems हैं healthcare के. It is our choice where we have to go. मगर गांधी जी ने क्यों nature cure choose किया? That is the question. The answer is simple.
that it matches with the natural healthcare science was the first thing. It is a non-violent system. It matches with the Gandhian principles of truth, non-violence, Sarvodaya, and Satyagraha. See, we have students from 1st to 10th. For them, what is nature cure, right? Simple words में मैं बताना चाहूंगी ना students के लिए. आप sciences पढ़ रहे हो, you are studying sciences in school, right? You have physics, chemistry, biology. Physics, ऐसे कोई rules, laws है जो nature में already functioning है. They are functioning in nature and they are a part of physics. For example, gravitational force. See, we didn't invent gravitational force. We discovered it. There is a difference in invention and discovery, right? We didn't do some experiment in the lab and we suddenly invented. The gravitational force was not there before. And then someone asked, why did the apple fall down? Why didn't it go up? And then we invented. We didn't invent, we discovered. हमें उस दिन पता चला कि something like a gravitational force is existing, is functioning around us. Gravitational force was there before that also. It is going to be there forever. We came to know that at a certain point in time and it is a part of physics. So many laws in nature that are functioning are a part of physics. Similarly, few laws that are already functioning in nature that are a part of functioning on the animal kingdom are a part of biology. Some laws, some rules of nature that are already functioning around us, which are on the molecular structures and in the chemical world, is a part of chemistry. So few laws that are already functioning in the nature, which are related to the health of that animal kingdom that you talk in biology, related to the health of that animal kingdom, are a part of nature cure. It's simple. We have not invented and discovered the science. We have discovered. We came to know the existence of these laws in nature, the physics, chemistry, biology. Similar is nature cure, naturopathy. All the laws related to the animal kingdom, the living kingdom, 84 lakh living species on this planet, the laws of health that are functioning in nature are a part of nature cure. And we are trying to understand today in a very, very simple way that how they are working for us. Right? That is nature cure. So in Gandhian principle, this was the truth, that let us first agree what is exactly there around us. So when he tried to understand the truth of health, he came to this user manual of the body as it exists in nature, and he adopted the system of health as nature cure. So basically nature cure fits in the user manual of the body as it is there, as designed by Mother Nature. Secondly, nature cure agrees with non-violence. Anything that harms your body is not a part of nature cure. And then we come to the thoughts. So no harmful thoughts, no harmful actions, no harmful food. No food that is going to harm your physical body and mind. And then it is the medicines which have side effects are also not a part of nature cure. So that fits in the non-violence principle of nature cure. Should I be continuing, ma'am? Anything, any issue? Then we Yes, ma'am. Thank you. Then we come to the principle of Sarvodaya. So Sarvodaya mentions that it's a progress of all. It's a body, mind, spirit, and the person as a part of society is considered in nature cure. So naturally, Gandhiji used to think of a social upliftment. So he adopted nature cure. And then it is the principle of Satyagraha also. So nature cure principles and go very close to the friendly passive self-resistance. And it is always friendly. Anything that is non-violent and harmful is not a part of nature cure. So nature cure principles fit exactly in the Gandhian principles that we try to follow. Now for Gandhiji, one more reason, what did he advocate in nature cure? So vegetarian food was the first thing that Gandhiji always preached when he talked about nature cure. As about his own lifestyle, Gandhiji was a strict vegetarian.
by custom also, but when he had the choice of being selecting whether to be a vegetarian or non-vegetarian, he chose to be vegetarian by choice also. And this fits in our natural requirement of the body too. There are few reasons why a human is naturally a vegetarian animal, we can say, because he's made by Mother Nature. So we also are one of the 84 lakh species that Mother Nature has created. So our digestive system fits matches the vegetarian animals, not the non-vegetarian animals. So the non-vegetarian food slightly has few different problems when it comes to our digestive system. We cannot go much deep in today's session regarding each point, but I can surely brush you through the logic of this. Then it depends on the toxic accumulation. जितना नॉन वेजिटेरियन फूड हम ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे हमारे लाइफस्टाइल में, उतना टॉक्सिक एक्यूमुलेशन बॉडी का हमारा बढ़ता जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, then we land up with something basic health issues called as obesity, acidity, constipation, headaches, migraine. जितना टॉक्सिक डिपोजिशन ज्यादा, उतने ये बेसिक प्रॉब्लम से शुरुआत होती है हमारी. हीलिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम अ हेल्थ इशू, हमें क्योरिंग अचीव करना है किसी चीज से, हेल्थ इश्यू से, नेचुरली जितना आप ज्यादा वेजिटेरियन फूड पे रहोगे, उतना आपका हीलिंग एंड क्योरिंग इज गोइंग टू बी फास्टर. हीलिंग इज ऑलवेज स्लोअर ऑन हेवी फूड्स, फास्टर ऑन लाइटर फूड्स. एंड अगर हमें स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट के बारे में सोचना है, डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सो देर आर n number of reasons that are mentioned in the scriptures, spirituality based, that support the vegetarian system of food rather than the non-vegetarian. So so many reasons are mentioned in spirituality also. So Gandhi ji suggested a vegetarian diet in food is the best. Nature Cure supports the idea of vegetarian food being the best. Secondly, he supported the exercise as the foundation of your health. The physical activity. Gandhiji himself was a exercise freak. Maybe few people might be knowing this. He has a very good record. It is said that he went around the earth twice. This is the record of his walking. He was a fitness freak. He was an exercise freak. He used to walk. Why walk? Walking is a moderate intensity exercise, It doesn't harm. It is the least harmful to your body. कभी कभी क्या होता है, जॉगिंग या जिम विम में हम अगर जाए एक्सरसाइज के लिए, समटाइम्स वी हैव नी इंजुरीज, sprains and twists and turns and muscle strain. This exercise, walking is the least injury prone exercise for us. And Gandhiji used to walk. He was very fond of exercising. He supported the idea of exercise. Nature Cure also supports the concept of exercise being the foundation or pillar of your good health. फिजिकल एक्टिविटी के लिए बॉडी हमारा बना है, डिजाइन किया गया है. एक जगह पे बैठने के लिए नहीं डिजाइन किया गया. कैसे पता चलेगा? सिंपल. स्टूडेंट्स और फ्रॉम 1st to 10th, आप ही सोचो, आप जब बैठते हो एक जगह ना क्लास के लिए, आपका क्लास चल रहा है 40 मिनट्स तक, कितना मूवमेंट करते रहते हैं ये बच्चे. यू कैन नॉट सिट, राइट? The teachers tell you, शांति से बैठो ना एक जगह, don't move. They will do something. They will scratch their head. They will take this pencil, keep it there. Books है, ये गिरा, वो गिरा, ऐसा करेंगे, हाथ ऊपर. Keep on moving, Body is made to move. अगर आपको बताया गया कि आधे घंटे के लिए ना बिना हिले जगह पे बैठो, you don't have to move your legs and hands and face and then sit still. If I tell any student, keep quiet and sit still. और देन सेकेंड ऑप्शन यू हैव कि आधे घंटे तक वॉक करो. What will you choose? What will be more peaceful? They will say, आधे घंटे के लिए हम वॉक करके आते हैं. I cannot sit on, my body is not made to sit. हम मूवमेंट्स, हम पैर इधर से उधर उठा के रखेंगे. Getting it? जितना आप बैठे रहोगे, specifically in the elder age, if parents are attending this session, जितना आप बैठे रहोगे जगह पे, उतनी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी. बॉडी इज मेड टू मूव, कीप इटसेल्फ इन द मोमेंट. बच्चों से लेके बूढ़ों तक हम यही बात देखते हैं हमेशा,
right? So naturally that exercise is the foundation pillar. What type of exercise is not told. Gandhi ji accepted walking. Walking is such a moderate and peaceful exercise. Anybody can do it, right? It is not complicated to do exercise, right? So considering this logic of nature cure, I think in today's session, we can try going through some common health issues that we face in our age group that is attending today. So in children, we have an age group of first onwards. So I think 6 to 12 years, we can see a certain category. There's certain basic common health issues that in that they are hyperactive, or few children in first, second, third standard, they still face the issue of bedwetting, or there is prolonged sickness. Cold हो रहा है, एक बार सर्दी हो गई तो वो ठीक ही नहीं हो रही, बहुत दिनों तक चालू है, या फिर हर 3-4 महीने के बाद रिओकरेंस हमें दिख रहा है, सर्दी सर्दी सर्दी, कंटिन्यूअसली सर्दी, right? So or there is some localized pain. They come home, they keep on complaining, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, इधर से pain हो रहा है, cannot, because this is not the age, na, 6 to 12 years for them to face the body pain problems, but they are. Sometimes it's low stamina, कभी उनकी height नहीं बढ़ रही, parents are little bit struggling to increase the height of the students, या low age में spectacles. अभी तक हमें पता था कि आंखों पे चश्मा कब चढ़ेगा, 40 years का, 40चा चष्मा असं आपण म्हणायचो मराठीत. So today we are seeing that small children are having the spectacles. What are the reasons? And our second age group we can talk about is the teenage, the transits, right from that teenage. Parents are afraid of this teenage. I think teachers also are slightly tensed about this, the teenage component, right? There are little girls face menses issues. There is a sudden weight gain, or they have some mind-related little challenges. I can say mind-related issues, but few challenges like peer pressures and developing unhygienic habits, and because they are going through that hormonal transits, and adjusting through that hormonal transits so many times goes difficult to them. So let us try if we can get some solutions to this in the simple way. अभी ये जो बच्चे हैं ना 6 to 12 years old, they are hyperactive. Simple tips अगर I think more अगर parents implement कर पाए तो, because these children are very small to do something by themselves and try something at home and make changes. So अगर कोई hyperactive है, main is avoid or reduce their sugar intake. Then we can think of other solution. जितना sugar आप खाओगे, sugar is a sweet poison. जितना आप sugar ज़्यादा खाओगे, उतना hyperactivity है, imbalance ही create होने वाला है. Second simple tip, bedwetting है, it's usually reflected as a mental insecurity in them. कुछ तो बात है जिससे वो 6 to 12 years, the small children are not finding that stability or the comfort. There can be a superficial thing also. It is not always that we have to put the blame on parents or something there, but thoda sa idhar udhar ke irrational, because they don't have the rationality to analyze the situations. So अगर हम जितना acupressure का एक beautiful support हमें मिल सकता है, it's the small finger point below the nakhun आपका, which you press, and then they gain the control over their bladder if that is missing, or the counseling and talking and discussion can help them a lot in overcoming that mental insecurity for bedwetting. If it's the prolonged sickness, cold का fever की तरह ना बार बार होने वाले diseases वो face कर रहे हैं, उनका immunity resistance पावर कम है. ऐसी कोई भी चीज हमें खाने पीने में नहीं मिलेगी या टैबलेट फॉर्म में नहीं मिलेगी, आप मल्टीविटामिन लो और ऐसे ये करो, जो रेजिस्टेंस को बढ़ा सकती है. रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी हमारे फूड हैबिट्स पे और लाइफस्टाइल पे और बॉडी के टॉक्सिक डिपोजिशन पे डिपेंड करता है. तो अगर हमें ये नेचुरली सॉल्व करना है तो यू कैन टेक अ गाइडेंस अंडर सम नेचुरोपैथ कि वो फूड हैबिट्स पॉजिटिव पे लाके पॉजिटिव लाइफस्टाइल थोड़ा शेड्यूल करके, कहीं लाइफस्टाइल में उनके गलत हो रहा है तो वो रिशेड्यूल हो जाएगा,
और थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन का अगर हम बॉडी क्लीनिंग पे वर्क करें तो उनका इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी और ये प्रोलॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट सिकनेस का उनको फेस नहीं करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम। लोकलाइज्ड पेन सिंपल है, हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं, नेक में दर्द हो रहा है, बाहर के मसल्स में दर्द हो रहा है तो बॉडी वीक है, इट्स अ मस्कुलर वीकनेस, तो हम उसके एंगल से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर पेट में दुख रहा है, इट इज इनडाइजेशन, वो खाना चबा नहीं रहे, खाना खाते वक्त बहुत सारा पानी पी रहे हैं, या फूड हैबिट्स आर गोइंग रॉन्ग, वेफर्स का पैक खोला और खाते बैठे, यू नो जंक फूड, द फूड हैबिट्स आर गोइंग रॉन्ग, समथिंग रिलेटेड टू इनडाइजेशन। सो उस तरीके से हम उसको नेचुरली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ फ्रीक्वेंट मेडिसिन ऑल्सो। स्टेमिना कम पड़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, या अर्ली एज में चश्मा लग रहा है, it's a clear indication of overall weakness in the body. So it's a overall health development for these children. जितना आप लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स और डिटॉक्स का सपोर्ट उनको दोगे, जैसे ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उनका स्टेमिना भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी, और जो स्पेक्स उनको लगे हैं वो चले भी जाएंगे। इट्स सिंपली अ इंडिकेशन ऑफ द ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन, नथिंग एल्स। आप उस ऑर्गन को फोकस मत करो, आईज में कुछ प्रॉब्लम है, आईज इज अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल बॉडी। बॉडी हमारा सेग्रीगेट नहीं करेगा ऑर्गन्स, आईज को मैं सेपरेटली सोचती हूँ, मैं बाकी के ऑर्गन्स को, बॉडी डजंट सेग्रीगेट ऑर्गन्स, ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग टुगेदर। व्हेन वी कम टू द यंग एडल्ट्स, now slightly they have set in the age of hormonal transits for them. Sudden weight gain, menses issue अगर है ना, उसका एक बहुत सारा कनेक्शन हमें वजन के साथ मिलता है। अर्ली चाइल्डहुड ओबेसिटी इज वन ऑफ द बेसिक रीजंस दैट वी फाइंड, वर्क ऑन दैट, फिजिकल फिटनेस और पॉजिटिव ईटिंग हैबिट्स। कभी कभी जो गर्ल्स बहुत अंडरवेट है, सी इट्स अ इम्बैलेंस इन द हेल्थ, underweight is also imbalance, overweight is also imbalance. It has to be in a healthy level. दोनों को menses issues face करने पड़ते हैं। Again, work on that naturally. The body comes out of this health problems. Secondly, if there is sudden weight gain, तो ये लोग ना खेलना ही छोड़ देते हैं। Yes, sometimes I don't know what's wrong. Classes ही इतने बढ़ जाते हैं उनके, that schools really do, our schools really do a great job, our teachers are teaching so nicely. हर एक पेशेंट को मैं रिकमेंड करती हूँ, पेरेंट्स को क्लासेस कम करो, ट्यूशंस को मत भेजो भाई, schools are doing their job very well. Right from first standard, parents will start the classes and tuitions, and put the children are sitting at one place continuous. This is not the age. They have massive energy supply. उनकी एनर्जी यूज होनी चाहिए, अगर ये एनर्जी यूज नहीं हुई, हेल्थ कोलैप्स ही होने वाली है। सो इट्स अ ग्रेट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स कंबाइंड टुगेदर, अननेसेसरी वेट गेन। इस वेट गेन से उनका स्टडीज में परफॉर्मेंस भी हैम्पर होगा। सो स्टूडेंट्स, यू डोंट सिट एट अ प्लेस, यू आर गेटिंग इट, यू हैव फ्रेंड्स अराउंड यू, आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं जो नजदीक रहते हैं, प्लान द फिजिकल एक्टिविटी, खेलो बाहर जाके। लकीली हम इंडिया में हैं, हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, 12 महीने आप खेल पाओगे, राइट? सो then we come to some certain, mental challenges that these teenagers, our dear teenagers face, peer pressures. They कभी कभी ऐसी आदतें लग जाती है जो हमें पता है बुरी है, मगर लोग बाकी के बच्चे कर रहे हैं तो तुम नहीं कर रहा। So, especially children 7th, 8th, 9th and 10th standard, usually it starts from 7, but 8th, 9th, 10th standard, तो आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाएंगे ना, ये क्या है, ऐसे नहीं कहता है, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, चीटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, ये so many times it आप as students भी you must be facing these challenges. So ऐसा नहीं है कि हर चीज जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं वो सही ही होनी चाहिए, गलत भी तो हो सकती है ना, सबसे गलतियां हो सकती है। फाइनली वी आर ह्यूमंस, टू एयर इज ह्यूमन, हम भी कभी कभी गलत होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं। हर बात जो सामने वाला कहे वो ठीक नहीं होगा, क्रॉस चेक करो, आपके पास आपके टीचर्स है, आपके पेरेंट्स है, काउंसलर्स है हमारे जैसे, जो आपसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं अबाउट दीज थिंग्स।
getting it to how to handle this peer pressure, what is good, what is bad. आपके टीचर, आपको एक्सपीरियंस है ना, आप 10 स्टैंडर्ड टिल 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स 15-16 साल का एक्सपीरियंस है लाइफ का, आपके टीचर्स को 30-40-50 साल का एक्सपीरियंस है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को 60-70 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ह्यूज, दे हैव सीन ऑल द एडवर्सिटीज। आप बात करो जाके उनसे कि ये बच्चे ये कह रहे हैं, what is the second side of the coin? Every side has two coins. It is not wrong to ask questions. कभी कभी हम डर के रुक जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट? 8, 9, 10 स्टूडेंट्स, कैसे पूछूं मैं मेरे मदर को, मेरे फादर को, कैसे बात करूं मैं मेरी टीचर से, वो मुझे डांटेंगे? कोई नहीं डांटेगा। काउंसलर से कैसे बात करूं, क्या मुझे हेल्प की जरूरत है या मुझ में प्रॉब्लम है ऐसे लगेगा, कोई ऐसे नहीं बोलेगा। आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उनको आपके दुगना तिगना चौगुना एक्सपीरियंस है। बात करो उनसे कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन मेरे आजू बाजू है, क्या सही है इसमें से, what is right and what is wrong. Your teachers will be equally open to guide you on this. Getting it? हम सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं ना पेरेंट्स को। अगर 12th का बच्चा है, अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, बाकी दो स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको नहीं लगेगा कि ये अलग चीज है, मैं क्या करूं, आई हैव टू ट्राई इट। यू आर गेटिंग इट चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हमें पता चल रहा है कि गलत कर रहे हैं दोस्त, मगर वो सब लोग कर रहे हैं और तुम्हें चिढ़ा रहे हैं कि तुम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, छे, व्हाट इज दिस? एंड देन दैट इज अ पीयर प्रेशर, बट इट इज नेगेटिव. Now here you have to understand that true power is that knowing that you can but you don't. You're getting it? एनालाइज करो कि जो कुछ कह रहे हैं, देयर आर टीचर्स टू गाइड यू, देयर आर काउंसलर्स टू गाइड यू, एंड देयर आर पेरेंट्स टू सपोर्ट यू। मैं वो चीज करके देखूं, ये लगना बिल्कुल गलत नहीं है, मगर ये लगने के बाद ये सोचना कि जो मैं करने जा रहा हूं ये सही है गलत है, ये इंटेलेक्ट का यूज है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी हैव दैट इंटेलेक्ट। गेटिंग इट? सो गाइडेंस लो आपने peer pressure के लिए. This is the most critical issue that our dear teenagers face, you know, in their lives transit, when they face that hormonal transit. Then sometimes कोई अनहाइजीनिक हैबिट्स भी डेवलप हो जाती है, फिजिकल क्लीनलीनेस से लेके, या ये हेल्थ एजुकेशन से हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग उनको एक्सप्लेन करके। और ये जो हार्मोनल ट्रांजिट्स है, जहां माइंड थोड़ा सा एजिटेटेड स्टेट में हो जाता है, या एंजाइटी डेवलप हो जाती है, या थोड़ा सा टेंशन लेने की आदत, आई डोंट नो व्हाई, इट इज सो स्मॉल एज, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, दिस इज द बेस्ट फेज टिल 10th स्टैंडर्ड का हमारे लाइफ में से। फिर व्हाट यू नो द बढ़ने वाली है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी इट इज सो एंजॉयबल। मेडिटेशन प्लेज अ वेरी गुड रोल व्हेन दिस हार्मोनल ट्रांजिट्स सेट इन। सो थोड़े बेसिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन या ब्रीदिंग या प्राणायाम इन योग, जितना थोड़ा बहुत आप उनका सपोर्ट लोगे ना, तो भी आप इन हार्मोनल ट्रांजिट से स्मूथ जा पाओगे। नाउ लेट अस प्रोसीड वन स्टेप अहेड। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस और फूड हैबिट्स की तरफ जाएंगे, जो हमें इन सारे हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने में मदद कर सकती है। यहाँ हमें एक बात याद रखनी है इसमें, कि जो फूड हैबिट्स की हम बात करेंगे या लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करेंगे ना, ये सबके लिए कॉमन है, राइट फ्रॉम अ 6 years old चाइल्ड टू अ 70 years old ग्रैंडमदर, सबके लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, राइट? इट्स द ट्रूथ इन द गांधीयन प्रिंसिपल, फर्स्ट एक्सेप्ट इट। मुझे एक चीज अच्छी लगती है तो वो बुरी कैसे हो सकती है? ऐसे नहीं होता। मुझे मैगी बहुत पसंद है, मगर जो बुरा है वो बुरा है, तो मम्मी डांटती है मैगी नहीं मिलेगा इतनी बार, इट इज गुड फॉर यू, बिलीव मी। जस्ट व्हेन प्रिंसिपल मैम इंट्रोड्यूस्ड, शी मेंशन्ड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन द प्रेजेंट। आपकी हेल्थ जब आप 20 साल के हो जाओगे, जब आप 25 साल के हो जाओगे, वो इस पे डिपेंड करेगी कि आप आज क्या कर रहे हो। योर फ्यूचर हेल्थ इज अ आउटकम ऑफ योर प्रेजेंट हैबिट्स। ऐसा नहीं है कि मैगी 6 साल के बच्चे के लिए अच्छा है, 15 साल के अच्छा है, एंड सडनली 30 साल में वो बुरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो चीज 30 साल में बुरी है वो 6 साल में भी बुरी ही है। जस्ट दैट आपकी बॉडी एडवर्सिटीज को ज्यादा सस्टेन कर रही है, दैट्स ऑल। मगर आपका अगर फाउंडेशन ही गलत हो जाता है,
children, if you are not developing the good habits right from your 6th standard, so first, second, third, fourth के children इस पे और ज्यादा ध्यान दे. Just remember that it's a foundation of your health. अगर आपको good looks चाहिए, our girls are opting for good figure and they want good hair, they want glowing skin. This is the foundation. आप अभी जितना mess up करोगे आपके growth age में till the age of 18-19, उतना मैं सब जिंदगी भर आगे होता रहेगा, तो कैसे मिलेगी एक ब्यूटीफुल फिजिकल बॉडी एंड माइंड, राइट? सो व्हाट इज ट्रू फॉर अ 6 years old is true for a 70-year grandmother also. So these food habits are applicable to all. It is not segregated for age group. Everyone has to follow them. So today, of course, it's a age group of, I think, 6 to 15. In basic things, we have a list of things to avoid and the things we can substitute them with. अगर आपको मीठा खाना पसंद है, children don't go for sugar. Sugar is a sweet poison. आप जितना चॉकलेट्स खाओगे, ग्लूकोज पियोगे, लिक्विड ग्लूकोज और शुगर पियोगे ना, उतना बॉडी को हार्म है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस्ड फॉर्म. ये नेचुरल फॉर्म में नहीं है, उसको बहुत सारा प्रोसेसिंग किया हुआ है. शुगर केन, ईट द शुगर केन, ड्रिंक द शुगर केन जूस, दैट इज गुड. मगर उसको प्रोसेस कर करके उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के उसमें केमिकल्स ऐड करके उसकी जब शुगर बनती है, गॉन, इट इज गोइंग टू डैमेज योर बॉडी. सब्स्टिट्यूट, जो चीज में शुगर डलता है उसमें हनी भी डाल सकते हो, आप डेट्स भी डाल सकते हो मीठा होने के लिए, आप जैगरी भी डाल सकते हो, गुड़ इंक्लूड करो, गुड़ ना. So substitute sugar with these things and prefer having those. आपके ओवरऑल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस में आपको मदद ही हो जाएगी. जहां आप लोग चिप्स खा रहे हो ना, जो डीप फ्राइड है, जो जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, आपको कुछ क्रंची टेस्टी टैंगी खाना है, आपको होल व्हीट से बनी हुई चीजें मिलती है. होल व्हीट का खाकरा भी तो मिल जाता है, विच इज क्रिस्पी, विच हैज डिफरेंट फ्लेवर्स. आपको खाकरे भी बहुत सारे फ्लेवर्स में मिल जाएंगे, क्रीम एंड ऑनियन, टमाटो फ्लेवर, पिज्जा फ्लेवर, दिस एंड दैट. सब्स्टिट्यूट दिस. मल्टीग्रेन की चीजें मिल जाती है, बेक्ड मिल जाता है इंस्टेड ऑफ फ्राइड. डोंट गो फॉर डीप फ्राइड. सब कुछ आप एंजॉय कर पाओगे, टेस्टी क्रंची लाइक चिप्स, बट इन अ हेल्दियर वे. So you have to include fruits and those crunchy nuts also. So एक बार का बीच वाला जो खाना है, मे बी 11 बजे सुबह या 4-5 बजे जब आप मुंह में डालते हो कुछ, उसमें फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए. They are going to help you develop your physical fitness, mind, concentration, grasping, your looks and everything. जो कुछ आप नेम करोगे, ये चीजें आपको मदद करेगी उसमें. बेकरी प्रोडक्ट्स आर बैड. अगेन, जो चीजें हमें ज्यादातर अच्छी लगती है वो बैड ही होती है हेल्थ के लिए. सो इट्स ब्रेड्स एंड केक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सब्स्टिट्यूट. अगर ब्रेड अवॉइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट गेट अ होल व्हीट ब्रेड, डोंट गेट अ मैदा ब्रेड. कुछ तो मदद होगी बॉडी को, राइट? सपोर्ट द बॉडी, हेल्प इट टू बी पॉजिटिव. हमें ही मदद करनी है, हमारी बॉडी है, हमें ही जीना है उसके साथ. तो वो जितना हम अच्छा रखेंगे, अपना घर है, राइट? वो हम जितना अच्छा रखेंगे वो उतना अच्छा हो जाएगा. बॉडी भी हमारा घर है. यू हैव टू लिव इन दैट. नेचुरली यू हैव टू मेक योर हाउस ब्यूटीफुल, एंड दीज थिंग्स आर मेकिंग इट ब्यूटीफुल. इंस्टेंट फूड, ट्रूथ अगेन, एक्सेप्ट दैट इट इज बैड. मुझे मैगी अच्छा लगता है तो मुझे खाना ही है, मुझे पता है बहुत टेस्टी है, मगर व्हाट इज बैड. अगेन, एक्सेप्ट द ट्रूथ. फ्रेश आइटम्स हमारे पास बहुत है. हमारे कल्चर, वी हैव अ यूनिक कल्चर विद सो मेनी टेस्ट. पोहा खाओ, उपमा खाओ, उसमें सब्जियां डालो. यू विल लव मेकिंग ऑल दिस, हैविंग द फ्रेश फूड ना, गरम गरम फूड जो मिलता है हमें किचन में से. आई एम श्योर योर मदर्स विल टेक दैट एफर्ट बिकॉज इट इज गुड फॉर यू. बस आप थोड़ा ओरिएंटेशन दिखाओ कि ठीक है, मैं मेरे लिए ही, खुद के लिए कुछ अच्छी चीजें अभी कर लेता हूँ. पढ़ाई किसके लिए करनी है? खुद के लिए करनी है, या आपके बाजू वाला टॉप आने वाला है, क्लास में फर्स्ट आने वाला है? खुद के लिए करनी है ना. हेल्थ के लिए भी खुद के लिए ही करना पड़ता है. फायदे भी आपको ही है, नुकसान भी आपको ही है, राइट? एंड कैन जूसेस,
जो कुछ हमें रियल जूस और ये सब मिलते हैं जो कैंस में पैक्ड रहते हैं, उनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। फ्रेश जूसेस बनाओ, जूसेस बनाना बहुत आसान है, सारे फ्रूट्स हमें पके हुए मिल जाते हैं। वो तो थोड़े से बड़े बच्चे जो है ना हमारे पास, 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, वो तो खुद भी बना सकते हैं ना जूसेस। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड योर मदर एवरी टाइम, राइट चिल्ड्रन? यू आर बिग, यू आर ग्रोन अप। थोड़ा आप एक बार पूछ लोगे ना ये जूस में कैसे बना सकते, यू लव एंड एंजॉय दोस फ्रेश जूस टेस्ट। इतना अच्छा जूस आपने जिंदगी में नहीं पिया होगा ना। कैन जूसेस आल्सो डोंट टेस्ट दैट वे। प्लस फ्रेश लाइव फूड एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। बेसिक चेंजेस कीजिए लाइफस्टाइल में, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। सिमिलरली एक फूड हैबिट्स है, सिमिलरली लाइफस्टाइल, बेसिक चेंजेस दैट वी कैन डू इन लाइफस्टाइल। अगेन 6 इयर्स से लेके 70 इयर्स के ग्रैंड मदर्स तक सबको एक कॉमन अच्छी या बुरी चीज होती है। सिंपल हैबिट्स। पहली बात, रात को वक्त पे सो जाइए। योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज फंक्शनिंग। आप जितना रात को जग के कुछ करने की कोशिश करोगे, इवन स्टडीज, आपका ग्रास्पिंग आधे पे आ जाता है। आई एम श्योर योर टीचर्स हैव वार्नड यू n नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू हैवंट लिसन्ड टू देम। दैट इज आल्सो राइट। हमेशा हमें बताया जाता है हम डे एनिमल्स है, हम नाइट एनिमल्स नहीं है। वी आर नॉट नॉक्टर्नल स्पीशीज। जितना हमारा ब्रेन एक्टिव और ग्रास्पिंग सुबह के आवर्स में होता है, व्हेन द सन इज अप इन द स्काई, उतना वो एक्टिव रात के वक्त नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट योर बॉडी फेसेस अगर आप 10 बजे के बाद जागना नहीं है और 6 बजे के बाद सोना नहीं है। सिंपल। इसमें भी एक बहुत बड़ा साइंस है कि हम कितना सारा मैसअप कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। एसिडिटी से शुरू होते हैं ये सारे इश्यूज अगर आप 10 बजे के बाद जाग रहे हो तो। और आपका ग्रास्पिंग आधे पे आ जाएगा। जितना आप डे टाइम में करोगे ना, उतना रात को नहीं हो पाएगा। राइट? गिव योर बॉडी द स्लीप, द रिजुविनेशन, द रेस्ट एट द राइट टाइम दैट फिट्स इन द नेचर्स बायोलॉजिकल क्लॉक। तो पहला, लेट नाइट जागना बंद करो। आपका हेल्थ और आपका माइंड और कॉन्सेंट्रेशन उधर ही सुधर जाएगा बहुत सारा। टीवी, फोन, गेम्स, कंप्यूटर, जगह पे बैठे मत रहो। बॉडी इज नॉट मेड टू सिट एट वन प्लेस। आप बड़े हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासरूम्स में हैं, आप बहुत चिट चैटिंग करते हो, क्लास में भी करते हो, क्लास के बाद भी करते हो। उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के ना खेल भी प्लान करो। आज क्रिकेट खेलने के लिए मेरे घर आओ, कल उसके घर जाओ, परसों उसके घर जाओ। सैटरडे संडेज अवेलेबल है आपको। यूज द टाइम। यू नो, हम लोग आते नहीं थे घर पे, हमें खींच के लाना पड़ता था खेलने। आई एम श्योर योर टीचर्स ऑल्सो व्हेन दे वर इन यंग एज, योर पेरेंट्स व्हेन दे वर इन यंग एज, उनको बुला के लाना पड़ता था। आप लोगों को धकेलना पड़ता है, जाओ घर के बाहर खेलो। इट्स वेरी एंजॉयबल। स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, राइट? क्लास के बाद, स्कूल के बाद, सब जगह आप एक दूसरे से इतना अच्छा शेयर कर पाओगे। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो बाहर जाके। या कभी खेलने का मन नहीं है, बाहर जाके बैठो, चिट चैटिंग करो, पर घर से बाहर निकलो। दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प योर माइंड टू रिजुविनेट इटसेल्फ। आप जितना ज्यादा टीवी, फोन, गेम्स और कंप्यूटर्स के आगे बैठोगे, उतना आपका माइंड स्लगिश होता जाएगा। मैंने आधा घंटा टीवी देखा, 1 घंटा टीवी देखा, मैंने थोड़ा सा, मेरा फेवरेट कंप्यूटर गेम है, मैंने आधे घंटे के लिए खेला। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप, इट विल बी इररेशनल इन टुडेज वर्ल्ड। देन डोंट स्टॉप, लिमिट द थिंग्स दैट आर बैड। चिप्स खाने ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैगी में खाऊंगी नहीं, नॉट पॉसिबल। लिमिटेड, कहाँ रुकना है ये हमें पता होना चाहिए। आपके पास पूरे फ्रेंड्स, आपको पता है कौन आपके पास बाजू रह रहा है, किसके बिल्डिंग में कितना बड़ा कंपाउंड है, हम कौन सा गेम कहाँ खेल सकते हैं। प्लान करो एक दूसरे के साथ और जाओ और खेल के आओ, पसीना पसीना हो के आओ, मिट्टी में थोड़ा सा भीग के आओ बाहर जाके। आपका रेजिस्टेंस इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगा, राइट? Then don't go for board games, sitting activities for a long time. अगर एक कुछ भी नहीं हो पा रहा, आपको कोई खेलने के लिए नहीं मिल रहा, go and join a स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, 2-4 स्पोर्ट्स ट्राई करो कि आपको पसंद कौन सा आ रहा है, बट बैठा बैठा नहीं। डू सम फिजिकल एक्टिविटी वाला स्पोर्ट्स। गो फॉर अ बैडमिंटन क्लास, गो फॉर अ क्रिकेट कोचिंग, गो फॉर अ फुटबॉल कोचिंग, बास्केटबॉल है, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी के गेम्स है, राइट?
अगर खेल नहीं हो पा रहा, ज्वाइन सम स्पोर्ट्स, उसी बहाने फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी. स्पोर्ट्स and this field play help you increase your concentration, grasping and memory to a great extent. आपके रिफ्लेक्सेस पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके बॉडी रिस्पॉन्सेस फास्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों में आपको मदद हो जाएगी. राइट, फिर अच्छी खासी भूख लगेगी और अच्छा खासा खाना भी जाएगा. आपको पकड़ के खिलाना नहीं पड़ेगा. मदर इज सिटिंग देयर, ये रोटी खत्म करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप ही आओगे मांग के, मुझे खाना दो, आई एम सर्चिंग फॉर फूड बिकॉज आई एम hungry, right? So these are the basic tips that I thought I can share with you regarding food and lifestyle. Now, when we come to health again, na, the World Health Organization का एक बहुत ही अच्छा definition है वो health के बारे में. They say that health is not merely a absence of disease. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लैब में कुछ टेस्ट कर लिया, ये वो हो गया, सब क्लियर आ गया and healthy. It has to fulfill 4 requirements. You have to be physically fit. ना, physically fitness एक requirement है. Second, you have to be mentally at peace. So stress, tension, anxiety, still your health is compromised. You cannot feel that health. Health is a feeling, the feeling you get from inside. Health has a second criteria, that your mind should be at peace. Thirdly, as a part of society as a whole, you should be comfortable in the society, because human is a social animal. And fourth is spiritual well-being. Spiritually, you should be high. If all these 4 criteria are fulfilled, a person, a human, is said to be healthy according to World Health Organization. Any one criteria missing, health balance is off. 100% health cannot be achieved if either one of these 4 parameters is not satisfied. So to sum it up, right, to sum the entire session up, I can say that it's a holistic approach towards health. Nature Cure is a holistic approach towards health. We are not segregating. We are humans. हमारे पास सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, हमारे पास एक मन भी है, माइंड, which is more tricky, mind. Then we are living organisms. So we have something called as life inside us, which we call as soul, spirit. कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, नहीं तो हम identify नहीं कर पाएंगे. And so health is a holistic science. It cannot be related only to physical body. So Nature Cure science में Gandhian principles exactly match with the Nature Cure science. The concepts in spirituality agree with the principles of Nature Cure science, and the definition, the concept of health according to the World Health Organization also matches with the Nature Cure science. And that was the reason Gandhiji himself followed and preached the science of Nature Cure. Thank you very much. I think, I hope that the session will be really some positive input for everyone. And I think, Madam, we can proceed with the question and answer session. Should I stop my presentation? Yes, madam. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your wonderful views about Nature Cure science. But ma'am, still our students have some queries. Sure. So now I hand over the session to Rupali ma'am to conduct the question answer session.
Yes. Now let's begin with our question answer session. Our student Tanuj Sugnalu from standard 9 will ask you a question. Hello ma'am, my name is Tanuj Sugnalu. I am studying in standard 9. Ma'am, my question to you is, what changes can come in our life if we follow Mahatma Gandhi's principle related to naturopathy? अगर हम महात्मा गांधी जी के प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े सिद्धांतों का पालन करें तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? Over to you, ma'am. Yeah, thanks, ma'am. See, गांधी जी का जो बेसिक गांधीयन जो बेसिक कंसेप्ट था वो इंडिपेंडेंस का था. द थिंग इज जैसे उन्होंने मैंने शुरू में कहा कि इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंस ऑन द हेल्थ लेवल ऑल्सो. हमारे तो हम क्या अचीव कर सकते हैं इफ यू फॉलो rather, you know, health is the basic. If it's said that if money is lost, something is lost, but if health is lost, everything is lost, right? आपके पास एक बड़ा घर है, students, you know, you are in 9th now, person who asks the question, right? So 10वीं के बाद आपको अपना करियर करना है, आपको अर्निंग करनी है, you know, students are thinking of those things. आपको एक जॉब है या बिजनेस है, आपको एक घर है, फैमिली है. सपोज आपके पास एक बड़ा घर है, आपके पास लैविश कार है, you know, you are earning in a beautiful amount, a good amount. आपका हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज्ड है. You know, you are in a place कि आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे इनमें से. Getting it? What Gandhi ji, the way he projected. So he was talking about independence on health level also. It's strange for me to say, मगर what you will achieve, आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं पड़ेगा. Getting it? So a beautiful example of what we can achieve, a simple जो मैं आपको बता सकती हूँ. अभी हमने पैंडेमिक फेस किया, कोविड. When people were so afraid, जो यहाँ वहां भाग रहे थे, लोगों को पता नहीं चल रहा था क्या करे, जो लोग इतना टेंशन में थे, हमारे नेचर केयर के स्टूडेंट्स जो जिन्होंने हमारा कोर्स कंप्लीट किया और हमारे पेशेंट्स जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है हीलिंग सिस्टम, वो घर पे बैठ के कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होके खुद को ट्रीट करके अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को ट्रीट कर रहे हैं, ऑल बीइंग टेंशन फ्री, क्योंकि उनको लॉजिक पता था कोविड का. Right? So this is what I felt in these last 3 years. This was a very great achievement from the side of nature cure. Basically, इतना confidently अगर एक person इतने बड़े पैंडेमिक को फेस कर सकता है, and I felt so good that बहुत मैक्सिमम पेशेंट्स ने मुझे खुद से ही ट्रीट खुद को करके अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करके बाद में बताया कि हमने ऐसे ऐसे किया और हमारा कोविड ठीक किया. उनको मेरे पास आना नहीं पड़ा. हमारे गुरु बताते थे कि अगर आपका नेचुरोपैथी का पेशेंट वापस आपके पास सेकेंड टाइम आया तो यू रिमेम्बर कि इट इज योर फेल्यूर. It's strange to say, but we don't have to go to doctors. It is a big achievement in life, being independent on health level. And Gandhi ji experienced that. What is this achievement of being stress-free about me, about my health? मुझे कुछ फिक्र ही नहीं हो रहा कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं भाग नहीं रही, मैं डॉक्टर्स का पता नहीं कर रही, मुझे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की फिक्र नहीं है. एंड दिस इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट इन ओवरऑल लाइफ बेसिकली, बिकॉज जो चीज हम आज सीखते हैं नेचर क्योर में, वो हमें जिंदगी भर काम आएगी. इट्स लाइक यू नो, हम क्यों सीख रहे हैं स्कूल का सिलेबस और कॉलेज हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट होना है. आपको एज स्टूडेंट्स टुडे, व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, आपको इंडिपेंडेंट होना है आपके आगे के लाइफ में, जहां आपको किसी भी और इंसान पे डिपेंडेंसी ना आए. यही इंडिपेंडेंस हमें हेल्थ के बारे में भी मिल सकता है, जब किसी पे भी आपको डिपेंडेंसी आने की जरूरत नहीं है. आप खुद अपने लिए स्ट्रांगली, जैसे आप इनकम वाइज इंडिपेंडेंट हो, आप हेल्थ वाइज भी इंडिपेंडेंट. Right? Yes, ma'am. Indeed, Gandhiji's introduction to nature cure began with his conviction in vegetarianism.
For him, vegetarianism is in spiritual harmony with the rest of nature. Now, our next student, Tirthesh Rathod from Standard 9, will ask you a question. Hello ma'am, my name is Tirthesh Rathod. I am from Standard 9. My question to you is, can you tell us one incident when Mahatma Gandhi ji made use of naturopathy? Yeah. क्या आप हमें एक घटना बता सकते हैं जहां महात्मा गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया था? ओवर टू यू मैम. या सो गांधी जी खुद एक नेचुरोपैथ थे. अभी उन्होंने उसका इस्तेमाल कहाँ किया? अभी पहली जो हम समझने की बात है ना यहाँ पे कि नेचुरोपैथी एक टैबलेट नहीं है, मैं बीमार पड़ने पे ले लूं. राइट, इट्स अ लाइफस्टाइल. इन सिंपल इट्स अ लाइफस्टाइल. जैसे योग है, हमें योग पता है ना, योगा पता है ना. योग इज अ लाइफस्टाइल. योगा इज नॉट अ पिल टू टेक व्हेन यू फॉल इन. अभी मुझे एक किसी पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं योग के बारे में, आसनास के बारे में, प्राणायाम के बारे में, उसके आहार विहार कुछ सोचा नहीं. सडनली उसको आर्थराइटिस हुआ, फिर वो जाता है और किसी इंस्ट्रक्टर को ढूंढता है. नाउ आई वांट अ योग इंस्ट्रक्टर क्योंकि मेरे जॉइंट पेन्स होने लगे हैं. ऑफ कोर्स योग विल हेल्प यू. आसनास आप करोगे, आप प्राणायाम करोगे, आप उसका आहार विहार फॉलो करोगे, इट विल हेल्प यू इन क्योरिंग आर्थराइटिस. बट द पर्पज ऑफ योग इज नॉट दैट. आर्थराइटिस हो ही ना इसका पर्पज है. इसीलिए योग में बताया जाता है कि आप 12 साल की उम्र से आसन और प्राणायाम की शुरुआत करो. इट्स अ लाइफस्टाइल. गेटिंग इट? हमें ये चीजें अष्टांग योग में ना, आहार विहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि तक सब कुछ बताया गया है. इट्स अ लाइफस्टाइल. गेटिंग इट? सिमिलरली नेचुरोपैथी इज अ लाइफस्टाइल. इट्स नॉट अ मेडिसिन टू टेक. मुझे अभी ये हो रहा है, हो जाएगा फायदा, अभी इसमें हो रहा है, हम नेचुरोपैथी से ट्रीट कर पाएंगे. मगर गांधी जी के जो इम्प्लीमेंट करते थे ना, कहाँ इम्प्लीमेंट करते थे? हर रोज इम्प्लीमेंट करते थे. हिज लाइफस्टाइल वाज बेस्ड ऑन नेचर क्योर. क्या खाना है, क्या पीना है, कब है, कितनी बार चू करना है, नहाना कब है, नहाना कब नहीं है, एवरीथिंग साइंटिफिक इज गिवन इन द यूजर मैनुअल ऑफ द बॉडी. फॉलोइंग दैट इज नेचर क्योर इन सिंपल वर्ड्स. इसके भी आगे जाके एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है वेयर ही यूज्ड टू इम्प्लीमेंट. वो ना गांधी जी लेप्रेसी पेशेंट्स होते हैं ना, मराठी में हम कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, लेप्रेसी पेशेंट्स को उनकी सेवा करते थे गांधी जी. उनके पास, और लेप्रेसी उस जमाने में ना लेप्रेसी पेशेंट्स को ऐसे गांव के बाहर सेग्रीगेट करके रखते थे लोग, क्योंकि उनको पता था कि वो कंटेजियस. ऐसे सोचते थे लोग कि दिस इज अ कंटेजियस डिसीज. तो जैसे ही लेप्रेसी का पेशेंट गांव में डिटेक्ट होता था, उसको बाहर निकाल के सेग्रीगेट करके रखते थे कि बाकी लोगों में स्प्रेड ना हो. गांधी जी उठ के रोज उधर जाते थे उन लेप्रेसी पेशेंट्स में. उनके बहुत बड़े वुंड्स एंड ना, और गंदे होते थे वो लोग. दे डिडंट मेंटेन द फिजिकल हाइजीन. गांधी जी जाते थे, उनको नहलाते थे, उनके वुंड्स क्लीन करते थे, उनको ड्रेसिंग करते थे. तो उनको लोग बहुत बार बोलते थे गांधी जी को कि ऐसे आप मत करो, क्योंकि कहीं आपको अगर लेप्रेसी हो गया, क्योंकि इट वाज नोन टू बी, लोगों को लगता था वो कंटेजियस है, तो वो बोलते थे कि अगर कहीं आपको हो गया ना तो आपको भी सेग्रीगेट कर देंगे ना, सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे आपको, तो आप ऐसे मत करो जाके. So Gandhi ji was so confident of his health because he was following nature cure. He used to say, कोई भी जर्म, वायरस, बैक्टीरिया अगर मेरे बॉडी में जाता है ना, वो सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा, इतना मेरा बॉडी क्लीन है. मुझे नहीं, ये टेंशन नहीं है, मैं फिर भी जाऊंगा और कितने भी बीमार पेशेंट्स है, बराबर वो जाके उनकी सेवा करके आते थे. ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज हेल्थ कि मुझे ये इन्फेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि बेसिकली मेरी बॉडी ही इतनी स्ट्रांग है कि वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकती है. यही कॉन्फिडेंस हमें फॉर्चुनेटली इन पेशेंट्स को कोविड में भी था कि आई नो अबाउट माई हेल्थ. तो वो कोविड का वायरस है या चिकनगुनिया का है या स्वाइन फ्लू का है, आई शुड नो माई हेल्थ. दैट इज द थिंग दैट गांधी जी यूज्ड टू प्रैक्टिस in his life. Yeah. So true, ma'am. Gandhi ji and his volunteers used naturopathy modalities to treat both war-wounded soldiers as well as a plague outbreak in South Africa.
Now our next student, Shreya Bhatti from Standard 9 will ask you a question. Hello, ma'am. I am Shreya Bhatti, and my question to you is: how can naturopathy help us to boost our immunity and develop concentration? Yes, sorry. प्राकृतिक चिकित्सा हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाने और एकाग्रता विकसित करने में हमारी मदद कैसे कर सकती है? Over to you, ma'am. Thank you. Yeah, so basically ये concentration और immunity ना, the resistance power basically, the core strength, ये इन बच्चों में तो बहुत ही important issues है basically. So कैसे है, like we say concentration ये mind से related है थोड़ा, और अगर हम immunity और resistance की बात करें then it's a physical body. तो एक चीज फिजिकल बॉडी की है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज माइंड की है जो हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन ज्यादा उतना ग्रास्पिंग एंड रिकॉलिंग, बेसिकली एग्जामिनेशन में बैठे तो वो रिकॉल भी तो होना चाहिए ठीक तरह से. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग बेसिकली, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. ये हमें पता है, जितना हमारा फिजिकल बॉडी हेल्दी स्टेट पे है उतना हमारा माइंड स्ट्रांगली फंक्शन करेगा. राइट? सिंपल सा एग्जांपल, आपको सर्दी भी हो जाती है ना, मिनिमम चीज ना, अभी सर्दी के नीचे और क्या होगा, कम से कम सर्दी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी वाला हेल्थ इशू है सर्दी. सर्दी भी हो जाती है, वी आर डिस्टर्ब. मुझे अजीब लग रहा है, इरिटेबिलिटी लग रही है, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, यू नो, देयर इज अ डिस्टर्बेंस. एंड व्हेन माय फिजिकल बॉडी इज गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू सर्दी, माय माइंड आल्सो कैन नॉट फोकस. गेटिंग इट? तो अगर हमें इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस और कंसंट्रेशन इनके बारे में सोचना है तो ये डिफरेंट चीजें नहीं है, ये एक साथ ही काम करेगा वापस, क्योंकि उसी फिजिकल बॉडी का वो माइंड है. दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे फंक्शन टुगेदर. जितना हम बॉडी को डिटॉक्सिफाइड रखेंगे, हमने गुड हैबिट्स देखे, गुड लाइफस्टाइल देखी, सब्स्टिट्यूशंस देखे, आप जितना जाके बॉडी के यूजर मैनुअल में बैठोगे, कोई भी मशीन आप यूजर मैनुअल फॉलो करके चलाते हो ना, आपकी कार, तो उसका इंजन स्ट्रांगली चलेगा. अगर आप यूजर मैनुअल को बिना पढ़े ही उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो इंजन वीक नेचुरली हो जाएगा. वो मशीन के बिना सर्विसिंग मैनुअल्स है, स्पीड लिमिट है, भले ही वो कार रास्ते पे चलने के लिए बनी है, मगर मारुति 800 है तो 80 किलोमीटर्स पे रुको भाई. आपके पास BMW है, आपके पास BMW है, चलाओ एट द स्पीड ऑफ 120-140, इंजन इज स्ट्रॉन्ग. बॉडी भी हमारा एक इंजन है ना, मेक दैट इंजन स्ट्रॉन्ग ताकि वो उस स्पीड्स को से चल पाए. अगर ऑलरेडी वो वीक है, मारुति 800 का है, तो उसका स्पीड थोड़ा कम है, ग्रास्पिंग कम है, कम यू नो कंसंट्रेशन कम है, उसकी रेजिस्टेंस कम है. उस मशीन को, यूजर मैनुअल को फॉलो करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के, उसको रेगुलर सर्विसिंग्स करके, यू नो, going in that positive lifestyle, fitting in the positive, developing those positive food habits, overcoming the existing health problems by detoxification under some proper guidance, you can make that engine and go to that BMW engine, and you will get the required speed and output and everything from it. That is the thing. The primary goal of naturopathy treatments is to empower the vital force to take care of health issues and use vital energy to enhance the body through a variety of approaches. Ma'am, now I'm also eager to ask you a question. Yeah, yes. What diet would you suggest for we students as per the principles of naturopathy? प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार आप हम छात्रों के लिए क्या आहार सुझाएंगे? Over to you, ma'am. Okay. या सो सी प्राकृतिक चिकित्सा अगर आप बोल के, मैं नेचुरोपैथी के हिसाब से डाइट है, तो जो हमने फूड हैबिट्स देखे तो बेसिकली वो चीजें खानी है जिसके लिए बॉडी बना है. सिंपल. अभी हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि बॉडी किस चीजों के लिए बना है? एवरी एनिमल नोज हिज फूड हैबिट्स, राइट? सिंपल. पैरट है, पैरट जब चिलीज देखता है, वो चिलीज पैरट के लिए बने हैं, हमारे लिए नहीं बने. हम जैसे ही चिली खाते हैं, द बॉडी गिव्स अप. गेटिंग इट? हर स्पीशीज के अपने अपने फूड हैबिट्स हैं.
एक इमेजिन कीजिए सिंपल सी चीज, अगर हम केवमेंस की तरह रहते हमारे नेचुरल एग्जिस्टेंस में, अभी हमने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिया है, हमारे आजू बाजू घर बांधे, फायर इज इन्वेंटेड, व्हील इज इन्वेंटेड, इसलिए चक्कियां बनी, हम बहुत सारा प्रोसेसिंग कर रहे हैं फूड पे। अगर हम केवमेंस की तरह रहते हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो हम कौन सी चीजें खाते ना? बच्चों के लिए भी ये सिंपल है इमेजिन करना, कौन सी चीजें, आप केव में रह रहे हो, नेचुरली आप उधर ही रहने के लिए बने हैं ना इंसान, वी वर केवमेंस। सो केव में रहते तो जो चीज हम हाथ से तोड़ के दांतों से चबा के खा सकते हैं, सिंपल, इट्स अ नेचुरल फूड। बॉडी किस ये क्या चीजें खाने के लिए बना है, क्या चीजें डाइजेस्ट करने के लिए बना है, जो हम हाथ से तोड़ के मुंह से चबा के खा सकते हैं उसके लिए बना है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप हाथ से तोड़ के मुंह से चबा के खा सकते हो? फल है, सब्जियां है, पत्ते हैं, ग्रीन ग्रीन लीव्स, सैलड्स हैं। तो नेचुरली बॉडी ये चीजें डाइजेस्ट करने के लिए बना है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में या हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यही नेचुरल चीजें कम होती जा रही है। आप आपके प्लेट में ढूंढो, आज जब आप घर पे लंच करोगे ना, ऑल द चिल्ड्रन, सैलड कहाँ है? दिख रहा है या मिसिंग है या अचार जितना ही थोड़ा सा है? गेटिंग इट, वेयर वी आर गेटिंग डाइवर्टेड। बॉडी किस चीज के लिए बना है और हम कर क्या रहे हैं? नेचुरल फूड क्या है? वेजिटेबल, सैलड्स एंड फ्रूट्स इज द नेचुरल फूड। ये तीन चीजें मेडिसिन का काम कर रहे हैं बॉडी पे। फूड इज अ मेडिसिन फॉर द बॉडी। अंदर के ऑर्गन्स को टेस्ट पता नहीं चलती, जब इट इज ओनली योर टंग, एक ही ऑर्गन है राइट जिसमें टेस्ट बड्स है। अंदर जाने के बाद बॉडी को ये पता चलेगा कि जो कुछ आपने खाया है, आपने प्रोसेस्ड फूड खाया, इंस्टेंट नूडल्स खाए, उसको टेस्ट नहीं पता चल रही, उसको ये पता चल रहा है कि ये एसिडिक हो रहा है, ये हेवी है डाइजेशन के लिए, इसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, इसमें मिल ही नहीं रहा मुझे कुछ, मुझे हेल्थ डेवलपमेंट में कुछ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है इस खाने, यही पता चल रहा है बॉडी को। बाकी के except your tongue, every organ is coming to know the qualities of your food. You are getting it? So natural food, हमें क्या खाना चाहिए? चिल्ड्रन ना, सिंपल सोचो, बॉडी किस चीज के लिए बना है? जो आप हाथ से तोड़ के ना दांतों से चबा के खा सकते हो, उसके लिए बॉडी बना है। वो चीजें ज्यादा इंक्लूड करो। आपका हेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन, आपका स्किन टेक्सचर, आपकी हेयर ग्रोथ, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी। बॉयज का मसल स्ट्रेंथ, मस्कुलर बॉडी, यू नो, एवरीथिंग इज अचीव्ड। ईट द फूड दैट द बॉडी इज मेड। A reasonable goal should be set to meet all the nutrients from different kinds of fruits and vegetables and herbs. Now, one of my colleague, Mrs. Aparna ma'am, will ask you a question. Hello, ma'am. I, Aparna Dhaigude, would like to a question. That is, what message could you like to convey to our students on the auspicious occasion of Gandhi Jayanti? गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप हमारे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? Over to you, ma'am. Yeah. So, today we went through the Gandhian principles also, right? हम ऐसे कह रहे हैं कि we want to try to follow what Gandhi ji has preached. So, उन्होंने Gandhian principle में truth non-violence के बारे में बात की है, वैसे उन्होंने nature cure के बारे में भी बात की है, right? It is like implementing the health science, getting it? Now, what I would suggest is like, you know what, maybe हर बच्चे ने, आपके स्टूडेंट ने commonly सुना होगा कि follow the principles. Now the question that I am sure कि हर एक के mind में आता है कि why follow? See, we have that intellect, right, which asks the question why. बाकी animals नहीं पूछेंगे why. But of course हमारे दिमाग में just because people are saying follow, should we follow? तो हमें ना एक बात बताई गई है जो हमने सेशन में भी देखी,
what you think, what you say, and what you act. Now, happiness. Gandhi ji ka एक saying है. Gandhi ji used to say, happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony with each other. आजकल प्रॉब्लम यही है कि हम जो सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और करते हैं, इसमें मिसमैच है. You rarely find a person who is doing all these three in a similar pattern. Gandhi ji was one of the person, and he lived a happy life. You know, what students of this age needs to understand. You know, as you go ahead in your life, 10th के बाद तो students अपने career की तरफ जाएंगे. आप बाहर जाओगे, बाहर की दुनिया में, तो आपको n number of different people से, you know, you are going to connect with n number of different people, which few of them, few experiences जो आपको आएंगे इसके बाद के life में, they are going to be on a good side, few are going to be on the bad side also. तो हमें ये सीखना पड़ेगा ना कहीं कि किसको फॉलो करना है. You have to idolize someone ना, कि मुझे इस तरीके की जिंदगी जीनी है ताकि मैं कम से कम प्रॉब्लम्स को फेस कर पाऊं, या मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं खुद ढूंढ पाऊं. So when we think कि बाबा 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जब इस दुनिया में सडनली बाहर जाएंगे, जब उनका एक्सपोजर बहुत सारी चीजों से होगा, गलत चीजों से भी और अच्छी चीजों से भी, ऐसा क्या चीज है जो हमें गाइड कर सकता है थ्रू दिस. और इन गलत चीजों का इम्पैक्ट हमारे करियर और लाइफ में भी है और हमारे हेल्थ में भी है, राइट. दोनों चीजें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जाएगी. तो फॉलो क्या, आइडियलाइज कौन सी चीज करनी है कि जो हमें गाइडेंस दे सके कि हम हमारा लाइफ, करियर और हेल्थ तीनों को पॉजिटिव की तरफ लेके जा सके हमारी जिंदगी में. गांधी जी इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल, बिकॉज व्हाट ही थॉट, he said, and he did. It is very difficult to achieve these three things and find these three things matching in a person. Getting it? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और करते हैं, ये तीनों चीजें at harmony होनी चाहिए. See to it, children, see to it that you yourself are following this principle, right? और जितना आप गांधीयन प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, जान पाओगे खुद से, what is he talking about in truth, what is he talking in non-violence, truth and non-violence, उतना आपका आगे का लाइफ जर्नी भी स्मूथली जाएगा. Experiences about people, going ahead in the career also, and maintaining your health in a positive direction also. So I would recommend all the students to really take a look at the Gandhian principles. Try to understand. Basic है, बहुत complicated नहीं है. जितना आप उनको समझोगे उतना आपका लाइफ जर्नी स्मूथ हो जाएगा. Yes, ma'am. Happy Gandhi Jayanti. Together, we must stand to empower our country in which way we can. Warm greetings on the occasion of Gandhi Jayanti. Thank you, ma'am. Now, I request our principal, ma'am, to express her views. Over to you, ma'am. It was a wonderful session, ma'am. Today, we had an outstanding personality, Dr. Asawari Chitale, for the webinar on an interesting topic, naturopathy, one of the principles of Mahatma Gandhi ji. Madam, we really appreciate you for sparing your valuable time with us and enlightening our viewers on this topic. You convinced our viewers how naturopathy can play a very important role in our life. What are the benefits of it? How should we follow it? And how it can lead a healthy and a successful life. It is never too late to change what you are. Thank you. Over to you, Farida. Thank you, ma'am. Let us be grateful to people who make us strong, healthy, and impart knowledge. They are charming ones who make our souls blossom. So I, Farida Sayyed, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, take the honor to propose a hearty vote of thanks. My heart fills with lots of gratitude and respect to our today's speaker, Dr. Asawari Chitale ma'am, for enlightening and enriching us with enormous knowledge and for her valuable presence.
A heartfelt thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar sir, committee members, trust members, principals, teachers, parents, and dear students for their enormous support. A special thanks to our technical team for their firm support to make this webinar a grand success. Thank you, all the enthusiastic, active, and encouraging viewers for joining us to Facebook Live and appreciating us by your valuable comments. Thank you all and stay tuned with Vijay Vallabh's Sunday Hour for more such fascinating and exclusive webinars. Have a nice day. Thank you. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving your overwhelming response. Thanks to our today's eminent guest. A special thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar. A big thanks to our team members. Mrs. Snehal Khataukar, Principal. Mr. Kalpesh Darji, Team Leader. Mrs. Farida Sayyad, Teacher. Mrs. Rupali Ghorpade, Teacher. Mrs. Itisha Shah, Teacher. Miss Bhavika Rathod, Teacher. Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Miss Daksha Dhalawat, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.